Everyone, today I am here to discuss our next project on machine learning, that is decision tree. Okay, in previous video we have discussed on the logistic regression in machine learning. Okay, today I am here to discuss one more project on machine learning, that is on the topics of decision tree. Basically, what is decision tree and why I used to use here in the form of decision tree. Okay, so basically in decision tree we have to define the data into two parts. Okay, on the basis of some similar characteristics or properties you have to define. Let's suppose in a college, if you have to judge how many students are playing cricket or not. Okay, on which basis? First of all, you know that's if their examination is nearby, if their semester examination is near. Let's suppose जैसे in my college the second semester examination is going to held in the 27th of the January. Okay, so if you go through the second semester student, then all the students are not ready to play cricket, because some students like to play cricket, some students like to prepare for examination due to some pressures. Okay, so basically on what properties you are divide the students play cricket or not. Similarly, if we have given a group of data, you to find the some properties and divide the data into two parts. Again, you can divide multiple parts going on. Okay, let's suppose you see here in the last section of the topics here. That's like a decision tree. Okay, some similar property divide data into two equal parts. Again, you got some similar property into in these groups. Then again divide into two. If here got again similar property, then again divide into two. इस तरीके से आपके finally वो ट्री बनती जा रही है. That's all about decision tree. Okay, on the some properties, ठीक है ना, we divide the data into two parts. Okay, on some similar properties, some properties we divide data into one positive property or other don't like this property. In previous in बचपन की बात है, you know about the कुछ, अगर एक अगर एक टॉपिक्स है, ये एग्री एक डिसएग्री, तो वो एक प्रॉपर्टीज होता है. जिस तरीके से आपने बताया कि एग्जामिनेशन सेमेस्टर का एग्जामिनेशन है, एक लाइक करेगा कि नहीं मैं एग्जाम के लिए तैयारी करूँ, एक लाइक कि नहीं मैं क्रिकेट खेल के आता, पढ़ाई तो बहुत हो चुकी है. ठीक है ना. So that's first of all you have to import numpys. Actually here I will not going to use the numpy, but ऐसे ही मैंने कर लिया. तो मैं बेसिकली numpy की यहाँ पे कोई यूज नहीं है. ठीक है ना, आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई यूज नहीं किया है. फर्स्ट ऑफ ऑल import pandas and shibon library. Okay, and then after you have to import your file, from which file we are going to work. Okay, and store in the variables that decancer. Okay, first of all we have to see this is our data. Okay, let's here. First of all, you know there is MB. That's a categorical variable. Okay, the first of all we have to get dummy variable because it requires more space and it's very difficult to plot the data. Okay, that's why we are good to use a dummy value 0 and 1 on the place of M and B. Okay, so here 0 and 1 we get using get dummy function. Okay, now here we drop the axis one. Okay, x. क्या किया मैंने, ये जो एक्सिस जो डायग्नोसिस रिजल्ट एम था उसको मैंने ड्रॉप कर दिया एक्स में जाकर के स्टोर कर लिया. अब यहाँ से ड्रॉप कर दिया एक्स, ठीक है ना. तो फाइनली आपके पास ये आया वाई. ठीक है, दो पार्टी मैंने डेटा का बांटा एक्स और वाई के पार्ट में. ठीक है, एक इनपुट और एक आउटपुट. ठीक है ना, इनपुट के बाद आउटपुट मिलेगा. नेक्स्ट तो क्या बोलता हूँ कि आपने एक टेस्ट एंड ट्रेन स्प्लिट जो मॉड्यूल्स है वो आपने इंपोर्ट किया फ्रॉम एसक्यूएल लर्न लाइब्रेरी. ठीक है ना. आफ्टर दैट आपने मैंने क्या किया, जो मैं डेटा था एक्स और वाई उसको मैंने टेस्ट और ट्रेन में डिवाइड किया. यहाँ मैंने 20 और 80% में लिया हूँ. ठीक है, 20-80% में लिया. ठीक है ना. तो यू कैन सी हेयर माई डेटा इज 100. ओके, total 100 rows, and here you see length of x test और 20. ठीक है ना. तो टेस्ट मैंने कितना भेजा हूँ, 20% भेजा हूँ. तो 100 का 20% इज 20. ओके, दैट्स ऑल अबाउट. फिर लेट्स सी वाई ट्रेन. ओके, ट्रेन में मैं भेजा हूँ 80% डेटा, 20% मैंने टेस्ट के लिए भेजा हूँ, तो 80% कहाँ जाएगा, ट्रेन में जाएगा. तो ऑफकोर्स दैट्स हेयर वी विल द डिसीजन tree classifier. Okay, from SQL learn library. Okay, and then fit function used to fit machine learning model using decision tree. Okay, after that we use the predict function to predict. Okay, then after we can see the what are the outcomes by age approx 95% accuracy. That's all about here. Confusion tree. Okay, okay, confusion matrix you can see. Yeah, that's all about. Here we can finally see the
here to plot the diagram tree decision tree, we have to need import plot tree from scalar library. Okay, and matplot from matplotlib लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया। मैंने क्या किया था, नंपाई एंड सीबॉर्न किया था, पांडाज, ठीक है। नंपाई का मेरे को काम नहीं थी, मैंने पांडाज और सीबॉर्न का यूज किया, और फिर स्केलर की जरूरत पड़ी, स्केलर मैंने इंपोर्ट किया। फाइनली मैंने आया मैट प्लॉट यूज किया, ठीक है ना। बेसिकली प्रोसीजर होते हैं जिसको फॉलो करके आप प्रोजेक्ट को आसानी से क्लियर कर सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन। दैट्स ऑल अबाउट टुडे प्रोजेक्ट। थैंक यू।